saw the film and I really liked the film. और सबसे अच्छी बात मुझे फिल्म की ये लगी कि आजकल जो डिप्रेशन का कॉज है बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स हो गए सुसाइडल टेंडेंसीज के बच्चों के, और ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स अकर अ लॉट. सो उस एक फैक्टर को हाईलाइट किया गया है और आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल नुआंसेस है फिल्म में जो कि दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं. और फिल्म जो उन्होंने जिस तरीके से बनाई है वो बहुत ही रियलिस्टिक एक तरीके से बनाई. मेलोड्रामा बिल्कुल नहीं था फिल्म में, विच इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट द फिल्म. और जैसा कि मैंने कहा बहुत ही सटल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और दर्शाया गया है. उनकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी, जो डायरेक्टर थे उनकी फर्स्ट फिल्म है. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्म बैकग्राउंड, सो उस चीज़ को मद्देनजर रखते आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट एंड परफॉर्मेंसेज. ऑफ कोर्स बोथ द एक्टर्स डिड अ ग्रेट जॉब. आई थिंक अली खान एंड सुचित्रा पिल्लाई वर फैंटास्टिक. So yeah, overall it's a good film. Thank you. It's amazing. To be honest, it's the first time I saw the movie. I hadn't seen it. I've been working, so I haven't been able to attend the other festivals. And I wasn't expecting to be as overwhelmed as I am, even though I know the material and I played the character. I'm quite blown away myself. यार, जब इंसान काम करता है तो कोशिश करता है कि काम बुलंद हो और ईमानदारी से काम करते हैं. Obviously, what happens to it is not in your hands. But you know, for a first-time director, I think Saila has done a fantastic job. It's been excellent. Whoever's seen it has loved it, and what people are saying is that we should try and dub it in different languages. So not only in Hindi, which is mainstream, but also regional languages, so it gets a wider audience. So I think that's fantastic. Thank you. The feeling that people in Mumbai have actually seen it is really good today. It's been appreciated and accepted the way we wanted it to be. This is what we wanted from the film. हम यही चाहते थे कि लोग हमारी फिल्म को अंडरस्टैंड करें, ऐसा नहीं सिर्फ देखने के लिए आए और चले गए घर. They understood the reason why this film was made and what message we wanted to bring across, which is what's the most important thing for us. Release के दौरान तो March 3rd को UK रिलीज़ होगा, उसके बाद US से फिर आएगा यहाँ इंडिया में. So the ones who got to see it today, they're the lucky ones. But most definitely, it is a movie that hopefully we will even dub in regional languages here, क्योंकि ये topic ही ऐसी है, सब लोग को देखना चाहिए. ज़रूर होना चाहिए. I think we should dub it. हम लोग तो अपना dubbing खुद कर सकते हैं in a few languages. So I think because
ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी लाइन है, जो बेस है स्टोरी का, ये it's not as if it only happens in America or in England. You know, it happens in every corner of the world, in every strata of society. This may be set in a very rich background family in America, but the very same depression can be had by a 16-year-old in a gaon in Mumbai, in India. So I think it's important for everybody to see it. ज़रूर ज़रूर, और मैं बहुत ही खुश हूँ. आई मीन 24 साल के बाद मुझे मेरा पहला बहुत बड़ा अवार्ड मिला है इसी फिल्म के लिए. आई गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस एट द लॉन्ग आइलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर दिस मूवी. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस मूवी के लिए मिला मुझे, क्योंकि एक तो हार्ट एंड सोल मैंने दिया, आपको दिखाई देगा फिल्म में. एज अ मदर मेरे दिल को छू गया था ये फिल्म. एंड क्योंकि थोड़ी नेगेटिव शेड्स भी है उसमें, जो मैं तो एकदम माहिर हूँ नेगेटिव प्ले करने के लिए, बट इट्स नॉट इन दैट जोन. बट to make her a character who was lovable, well, who people feel sorry for, who like to pity, but who also say, my God, she could have been a better mother. You know, that's what makes it interesting. That the Valley was so well received in India, because it's about Indian immigrants in the US, and you know, there are some cultural shifts and cultural values that are different, and you know, things shown in the movie, and I wasn't sure how it would be received in India, and I'm so happy with the response. Yes, I think so. I mean, I'm talking to somebody about dubbing and distributing it in India. So, do you think the responsibility will become higher when you represent your country in another country? Like, you're presenting your India to another country, the responsibility become higher, do you think? I think that in the movie, I show Indians who live in the U.S. So I'm not really talking about India, and I think that's a touchy issue. Like when people make movies about India, oftentimes they focus on the poverty, and you know, they focus on, you know, the really lower middle class and the downtrodden. They don't so much focus on the middle class and the problems of the average middle class when they're, you know, taking movies from somewhere else. So there is some responsibility to how India is depicted, but that's not really what's done in this movie. Thank you. Yeah, I saw the film and I really like the film. और सबसे अच्छी बात मुझे फिल्म की ये लगी कि आजकल जो डिप्रेशन का कॉज है बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं. काफ़ी इंसिडेंट्स हो गए सुसाइडल टेंडेंसीज के बच्चों के, और ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स, यू नो, दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स अकर अ लॉट. सो उस एक फैक्टर को हाईलाइट किया गया है, और आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल नुआंसेस है फिल्म में जो कि दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं. और फिल्म जो उन्होंने जिस तरीके से बनाई है वो बहुत ही रियलिस्टिक एक तरीके से बनाई है. मेलोड्रामा बिल्कुल नहीं था फिल्म में, विच इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट द फिल्म. और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही सटल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और दर्शाया गया है. उनकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी, जो डायरेक्टर थे उनकी फर्स्ट फिल्म है. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्म बैकग्राउंड, सो उस चीज़ को मद्देनजर रखते आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट. एंड परफॉर्मेंसेज ऑफ कोर्स, बोथ द एक्टर्स डिड अ ग्रेट जॉब. आई थिंक Ali Khan and Suchitra Pillai were fantastic. So yeah, overall it's a good film.